and today I am conducting social studies lecture for grade 5. We are taking up with chapter 1, our earth, continents and ocean, and this is session number 5. We have already finished the explanation part of this chapter, but let us recap the chapter once and then we'll move on to the exercise part. Okay? So let us start the recap. Firstly, in the recap, we learned that percentage of land and water on earth. Yes, we discussed that the earth's surface has two main parts, land and water. Okay, so how much percent of land and how much percent of water is present on the earth? So let us see that. Yes, as we discussed in earlier lectures, we are having 71% land and 29% water on the surface of earth. That means the water is more than the land, and hence the earth seems to be blue in color when we look at it from the space. ऊपर आकाश में से जब देखोगे तब वो ब्लू कलर का अर्थ दिखता है, कहीं कहीं ग्रीन पैचेस होते हैं मगर ज्यादातर ब्लू कलर का, बिकॉज द वाटर परसेंट इज वेरी हाई. Then next we discussed about continents and oceans. So what are continents? Big land masses are called continents. There are 7 big land masses on earth and these big land masses are called continents. जो अर्थ के ऊपर लैंड एरिया है उनमें से जो बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं उनको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे. देन ओशियंस, the water bodies, big water bodies are called oceans. बड़े बड़े water bodies हैं जिनको हम oceans कहेंगे. So all together big water bodies on the earth are 5. So let us see which are they. 7 continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. 7 continents. अब इनके स्पेशलिटीज क्या थी? एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. देन एशिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑल्सो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी एशिया में ही है. आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन एशिया. द अदर कंट्री विच इज मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सिचुएटेड इन एशिया इज चाइना. चाइना भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ही कंट्री है और ये भी एशिया में ही है. नेक्स्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट. वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. ये भी एशिया में ही है. देन इंडिया और इंडिया के जो नेबर्स है दे आर हैविंग सम कॉमन लैंडफॉर्म्स और कॉमन कल्चर्स. सो दीज together, India और उसके neighbors को all together sometimes they are known as Indian subcontinent. Indian subcontinent कहते हैं. Then looking towards Africa. Africa is the second largest continent. Africa is surrounded by the water bodies on all the sides. चारों तरफ से water bodies से घिरा हुआ है अफ्रीका. Mediterranean Sea to the north, Indian Ocean to the east, to the west is Atlantic Ocean. तो सारी तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है. Then longest river Nile and the largest desert that is Sahara Desert is also situated in Africa. Then Suez Canal which connects Mediterranean Sea to Red Sea. It is a man-made canal and it is in Egypt. And this canal is making a way for transportation from Europe to Asia without going around Africa. Then talking about North America. North America के बारे में बोलेंगे. North America is the third largest continent. Third largest continent में आता है ये. Christopher Columbus had discovered North America. क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के इंसान ने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था. ओके. देन यूएसए और कनाडा ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है. यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स
of America. Okay. Then talking about South America. Next one. It is the fourth largest continent. Okay. And the largest rainforest, world's largest rainforest, that is Amazon rainforest, is also situated in this continent, that is South America. Then talking about the next, Antarctica. It is the fifth largest continent and it is also known as white continent because it is covered with snow throughout the year, okay, and surrounded by stormy seas. Then talking about next is Europe. Europe is the sixth largest continent, okay, and Europe and Asia together they are called Eurasia. Europe and Asia together they are called Eurasia. Europe is the sixth largest continent, but it is most developed one, and though it is smaller in size, the population is also a bit higher. Next talking about the last one, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, वो एक कंट्री भी है और वो एक आइलैंड भी है. इट इटसेल्फ वो अपने आप में ही कॉन्टिनेंट भी माना जाता है, कंट्री भी माना जाता है और एक आइलैंड भी माना जाता है. नाउ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर आइलैंड ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया. ऑस्ट्रेलेशिया. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 5 ओशन. अब हम 5 ओशंस के बारे में एक बार रिकैप करते हैं. फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, नेक्स्ट अटलांटिक ओशन, नेक्स्ट इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड द लास्ट वन आर्कटिक ओशन. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल these things in this chapter. This is a full recap of this chapter. So before I begin with the textbook exercise, I have already sent you the CW work last time. In my last session I have sent you the CW work through the PDF, but in this session I will be sending you what you have to do in your textbook. आपको textbook में क्या करना है उसका PDF में भेजूंगी और ये textbook की exercise है, हम एक बार discuss कर लेंगे. Done? So before I start with this today, I want to show you a small video of this chapter. So let us see the video first. Millions of years ago, the Earth consisted of one huge landmass called Pangaea. It was surrounded by a large ocean called Panthalassa. Then the land broke up and started to form separate land masses. There are 7 continents, namely Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia respectively. There are 5 oceans, namely Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. Asia is the largest continent, covering approximately 30% of the Earth's total land area. The highest mountain peak in the world, Mount Everest, is situated here in Nepal. Africa is the second largest continent in the world. The world's largest hot desert, the Sahara Desert, and the world's longest river, the Nile, are in Africa. North America is the third largest continent in the world. The famous Niagara Falls is found in this continent. South America is the fourth largest continent in the world. The world's highest waterfall, the Angel Falls, is in South America. Antarctica is the fifth largest continent and is located in the South Pole. It is the coldest, windiest and driest continent. Europe is actually connected to the Asian landmass and hence the whole landmass is called Eurasia. Vatican City, the world's smallest country, is located in Europe. Australia is the smallest of all the 7 continents. It is also known as the island continent. The world's largest coral reef, the Great Barrier Reef, is found here. The Pacific Ocean is the largest ocean. The deepest point on the Earth,
The Challenger Deep in the Mariana Trench is found in the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean. This ocean has been a popular route for trade and colonization. The Indian Ocean gets its name from the Indian Peninsula. Singapore is a busy seaport in the Indian Ocean. The Southern Ocean or the Antarctic Ocean surrounds the continent of Antarctica. It is home to nearly 10,000 species, many of which cannot be found anywhere else. The Arctic Ocean is the smallest and shallowest among all the other oceans. It remains frozen for most part of the year. How are you all? Myself Khyati Vyas from JMP English Medium, and today I am conducting Social Studies lecture for grade 5. We are taking up with chapter 1, Our Earth, Continents and Ocean, and this is session number 5. We have already finished the explanation part of this chapter, but let us recap the chapter once and then we'll move on to the exercise part. Okay, so let us start the recap. Firstly, in the recap we learned that percentage of land and water on earth. Yes, we discussed that the earth's surface has two main parts, land and water. Okay, so how much percent of land and how much percent of water is present on the earth? So let us see that. Yes, as we discussed in earlier lectures, we are having 71% land and 29% water on the surface of earth. That means the water is more than the land, and hence the earth seems to be blue in color when we look at it from the space. ऊपर आकाश में से जब देखोगे तब वो ब्लू कलर का अर्थ दिखता है, कहीं कहीं ग्रीन पैचेस होते हैं मगर ज्यादातर ब्लू कलर का, बिकॉज द वाटर परसेंट इज वेरी हाई. Then next we discussed about continents and oceans. So what are continents? Big land masses are called continents. There are 7 big land masses on earth and these big land masses are called continents. जो अर्थ के ऊपर लैंड एरिया है उनमें से जो बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं उनको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे. देन ओशियंस, द वाटर बॉडीज, बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस. बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं जिनको हम ओशियंस कहेंगे. So all together big water bodies on the earth are 5. So let us see which are they. 7 continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. 7 continents. अब इनके स्पेशलिटीज क्या थी? एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. देन एशिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑल्सो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी एशिया में ही है. आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन एशिया. द अदर कंट्री विच इज मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सिचुएटेड इन एशिया इज चाइना. चाइना भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ही कंट्री है और ये भी एशिया में ही है. नेक्स्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट. वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. ये भी एशिया में ही है. देन इंडिया और इंडिया के जो नेबर्स है दे आर हैविंग सम कॉमन लैंडफॉर्म्स और कॉमन कल्चर्स. सो दीज टुगेदर, इंडिया और उसके नेबर्स को ऑल टुगेदर समटाइम दे आर नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. देन looking towards Africa. Africa is the second largest continent. Africa is surrounded by the water bodies on all the sides. चारों तरफ से water bodies से घिरा हुआ है अफ्रीका. Mediterranean Sea to the north, Indian Ocean to the east, to the west is Atlantic Ocean. तो सारी तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है. Then longest river Nile and the largest desert, that is Sahara Desert, is also situated in Africa. Then Suez Canal.
which connects Mediterranean Sea to Red Sea. It is a man-made canal and it is in Egypt. And this canal is making a way for transportation from Europe to Asia without going around Africa. Then talking about North America. North America के बारे में बोलेंगे. North America is the third largest continent. Third largest continent में आता है ये. Christopher Columbus had discovered North America. क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के इंसान ने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था. ओके, देन यूएसए और कनाडा ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है. यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, देन टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका. नेक्स्ट वन, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, एंड द largest rainforest, world's largest rainforest, that is Amazon rainforest, is also situated in this continent, that is South America. Then talking about the next, Antarctica. It is the fifth largest continent and it is also known as white continent because it is covered with snow throughout the year, okay, and surrounded by stormy seas. Then talking about next is Europe. Europe is the sixth largest continent, okay, and Europe and Asia together they are called Eurasia. Europe and Asia together they are called Eurasia. Europe is the sixth largest continent, but it is most developed one, and though it is smaller in size, the population is also a bit higher. Next, talking about the last one, Australia. ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, वो एक कंट्री भी है और वो एक आइलैंड भी है. इट इटसेल्फ वो अपने आप में ही कॉन्टिनेंट भी माना जाता है, कंट्री भी माना जाता है और एक आइलैंड भी माना जाता है. नाउ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर आइलैंड ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया. ऑस्ट्रेलेशिया. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 5 ओशन. अब हम 5 ओशंस के बारे में एक बार रिकैप करते हैं. फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, नेक्स्ट अटलांटिक ओशन, नेक्स्ट इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड द लास्ट वन आर्कटिक ओशन. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. दिस इज अ फुल रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. सो बिफोर आई बिगिन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, I have already sent you the CW work last time. In my last session I have sent you the CW work through the PDF, but in this session I will be sending you what you have to do in your textbook. आपको textbook में क्या करना है उसका PDF में भेजूंगी और ये textbook की exercise है, हम एक बार discuss कर लेंगे. Done? So before I start with this today, I want to show you a small video of this chapter. So let us see the video first.